Hello and welcome to endorphin classes. As we have done the Raoult's law, the deviations of Raoult's law and the azeotropic mixtures in the lecture 5. Now today we will going to discuss about the colligative properties. Actually, whenever we are adding the non-volatile solute to the solvent, that is a non-volatile solute to the solvent, and the solvent is always volatile in nature, it is considered as A, and the non-volatile solute will be considered as B, and the solution is very dilute. So here we are taking the two conditions, that is the solute is non-volatile in nature and the solution is very dilute. That means the amount of the solute is very small. So in that case, what will happen? The solution formed by adding this and using this condition, we are getting a solution, and this solution will exhibit the some characteristics properties, and these properties depends only on the number of molecules और ions किसके solute के number of molecules or the ions of the solute, not on the nature of the solute. Nature के ऊपर independent है. This question is very important. In colligative properties, the properties which are depends only on the number of molecules or the ions of the solute, and it is independent on the nature of the solute particles. These properties are called the colligative properties, and we can say that is they are depending only on the molar concentration of solute. कि हमने solute कितना डाला है. अब concentration हम काफी टर्म में कर चुके हैं, that is in the terms of mole fraction, we can term in the terms of molality, in terms of molality, in terms of molarity. ये सभी concentration terms हैं जिसके अंदर solute की concentration हम निकालते हैं. So there are basically four colligative properties are in the solutions. That is, first is the relative lowering of vapor pressure. बाकी की तीन properties भी हैं. एक हुआ आपका relative lowering of vapor pressure, सेकेंड आपकी है elevation in boiling point. Elevation in boiling point, which is denoted as delta TB, and the depression in freezing point. Freezing point, depression मतलब कम होना. Depression in freezing point, that is considered as delta TF, and the last is the osmotic pressure. Osmotic pressure, which is representing by pi. So we will discuss about the four colligative properties, and this is the last topic regarding the chapter solution of class 12, and the abnormal in molecular masses and the Ventov factor is deleted or reduced from this session also. So let us start with the relative lowering of vapor pressure. देखिए, lowering of vapor pressure we have done in the Raoult's law in the lecture 3 and 4, that is whenever you are adding the non-volatile solute. जब आपने non-volatile solute add किया था, the Raoult's law was Pa plus Pb. But whenever the non-volatile solute is there, so Pb will become 0. That is, there is no contribution of जो आपका no contribution of the solute in the total vapor pressure. So P total will become equal to Pa. That is of the mole आपका ये आप pure solvent, vapor pressure of pure solvent, and this is the mole fraction of solvent. So the P total will become Pa naught and Xa. So in that manner, you can say कि the vapor pressure of the solution, and this is the vapor pressure of the pure solvent. So there is a lowering down because they will occupy the surface of the solvent particles that already we have discussed in the lecture 3 or 4. That is, there is a reduction in the vapor pressure of the solution. ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और ये है प्योर सॉल्वेंट का. तो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिमेंबर वन थिंग कि वेपर प्रेशर एंड लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोथ आर नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ये क्वेश्चन भी बनता है. वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है. बट व्हेनेवर वी आर कन्वर्टिंग दिस lowering of vapor pressure in terms of this one, that will become relative lowering of vapor pressure, and this is the colligative property. So first of all, you should know about the symbols. So this is called relative lowering of vapor pressure, and this is called lowering of vapor pressure. This is not the colligative property.
Vapor pressure is also not the colligative property, but this is the colligative property, that is the relative lowering of vapor pressure. As you know well, now let us start with how will you calculate the molar mass using this relative lowering of vapor pressure. So you can start with PA is equal to PA naught XA, जो अभी हमने ऊपर लिखा ही है. PA is equal to, then you know well, XA plus XB is equal to 1. So whenever we are converting this, because colligative property is not depending upon the solvent, it is depending upon the solute. So we can convert this XA into XB like this, and you can place the value PA naught 1 minus XB. When you will rearrange in the mathematical situations, when you rearrange it, then you will get the relation PA naught minus PA divided by PA naught, which is equal to XB. Now you know well, XB is the mole fraction of solute. ये mole fraction of solute है. And if the relative lowering of vapor pressure is depends upon the mole fraction of the solute, means the moles of the solute, or because XB is what? XB is equal to NB upon में NA plus NB. Okay. Now since we are taking that it is a very dilute solution, so you can take NB is very less than as compared to NA. तो यहाँ से आप इसको neglect कर सकते हैं. तो XB value will comes out to be NB upon में NA. Now all of you know well कि what is the meaning of NB? That is WB upon MB, and NA is equal to WA upon MA. Then you will substitute these value here. So you will get PA naught minus PA divided by PA naught, which is comes out to be what? That is WB upon MB into MA upon में WA. Now this is the relationship between the relative lowering of vapor pressure and the mole fraction of the solute. ये आपको given होता है, ये आपको given होता है, ये आपको given होता है, but the solute is unknown. हमें नहीं पता कि हमने कौन सा सोल्यूट डाला है. तो यू हैव टू बी कैलकुलेट द MB. सोल्यूट हमेशा अननोन होता है इसमें. तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट यूजिंग दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. एंड यू कैन आल्सो से कि एज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज you can see it is directly proportional to the amount of the solute. So you can say it is a colligative property because it is depends on the amount of the solute, not the nature of the solute. Similarly, you can calculate you can find out the molar mass. This is a relationship between, you can easily understand the relative lowering of vapor pressure and the molar mass are inversely proportional to each other. तो ये भी आपका आता है कि colligative properties में जितनी भी अभी आप चारों colligative properties देखेंगे, they are directly proportional to the mass of the solute, but they are inversely proportional to the molar mass of the solute. ये molar mass के inversely proportional होंगे. So depending upon this topic, there are few numericals we will discuss here. Now you can write the formula in this manner. That is the molar mass of the solute can be calculated by using this formula, and you will see how can we apply this formula in the numerical. So read the numerical carefully. That is, a solution is made up of dissolving 30 gram of non-volatile solute. What does it mean? It is WB. एक एक लाइन से आपको पहले डाटा बनाना है, then you have to be start the numerical. With dissolving 30 gram of non-volatile solute. Okay. In 90 gram of water, that means WA is given 90 gram and WB is given 30 gram. It has a vapor pressure of 2.8 K Pascal at 298 Kelvin. तो solution का है ये, means PA है. Solution का बता रहा है ये, so that is 2.8 किलो पास्कल. ये आपका PA की वैल्यू होगी. At 298 Kelvin temperature, the vapor pressure of pure water. Vapor pressure of pure water means PA naught. हमने उसी symbolization form में लिखना है जिस symbolization form में numerical होता है, formula होता है. 3.64 K Pascal. Calculate the molar mass of the solute. आपको MB you have to be find out. So if you will see this numerical, this formula, you want to be calculate MB. WB is given, that is 30 gram. MA is 18 gram. Water का अगर आप H2O लेते हैं तो water is MA. तो MA is 18 gram. 18 gram आ जाता है. ठीक है. Then you will apply
total, everything is given to you. Numericals are very simple regarding the colligative properties. If you apply all these values in this, you will get that MB will comes out to be 26 gram per mole. So you can find out the answer and tally whether you are getting the correct answer or not. Now turn over to the second numerical. The vapor pressure of pure benzene at certain temperature is 0. Vapor pressure of pure benzene in non-volatile. Pure benzene means ये आपको दिया हुआ है PA naught. PA naught is 0.850 bar. In non-volatile or non-electrolytic solid is 0. means ये 0.5 आपको क्या दिया हुआ है WB, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए है ये हो गया. एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, इसका मतलब ये WA आपको दिया हुआ है 39 ग्राम. द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज देन, अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मींस PA इज 0.845. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट? आई थिंक नो प्रॉब्लम इज देयर एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू NCERT. ये NCERT का न्यूमेरिकल है आपका. So in this case you will find out the answer which is comes out to be 170 grams per mole. 170 grams per mole. You can find out this value. ये आपका आंसर आएगा. You can check it out कि whether the answer is correct or not. Now the second colligative property is the elevation in boiling point. As you know well, कि what is the boiling point? That boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. जहां पर vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure, and the atmospheric pressure is normally taken as 1 atm, which is equal to 1.013 bar. तो atmospheric pressure के जब equal हो जाता है तो liquid will start boiling. But boiling is not a colligative property. Boiling point colligative property नहीं है. But elevation in boiling point is colligative property. Now see what is the meaning of elevation. Elevation means increase in boiling point as the non-volatile solute added to the solvent, then vapor pressure of the solution decreases. That we have seen. As a result, what will happen? Boiling point of the solution becomes greater than that of the pure solvent. ये हमने solvent लिया. Solvent के अंदर आपका जो boiling point था pure solvent का वो है TB naught. Boiling point of the pure solvent. Suppose अगर हम water लेते हैं तो boiling point of the water क्या होता है? This is 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं केल्विन में तो दिस विल बिकम 373 केल्विन. ये होता है वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट. बट व्हेन यू आर एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू इट, द बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजेस. इससे इंक्रीज कर जाएगा, जैसे 373.5 हो जाएगा या कुछ भी इसका बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट इज नोन एज TB. अगर हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो दैट विल बिकम TB. तो elevation in boiling point will become delta TB is equal to TB minus TB naught. ये है solution का which contain non-volatile solute, और ये है आपका pure solvent का. Now see how does it happen, और किस तरीके से ये आपका graphically representation में you can prove it कि that is delta TB is equal to TB minus TB naught. Now for that a very simple graph we have to draw between the वेपर प्रेशर के बीच में और टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो इसके अंदर आपका क्या होगा कि दिस ग्राफ, सपोज दिस कर्व AB कर्व अगर हम कहते हैं, तो ये आपका है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट के लिए. दिस ग्राफ इज प्योर द प्योर सॉल्वेंट. बट यू नो वेल व्हेन वी आर टेकिंग द सॉल्यूशन एंड वी आर एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू इट, अगर हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो यू विल गेट दिस ग्राफ. ये है आपका सॉल्यूशन का, ये वेपर प्रेशर का है, बिकॉज देयर इज ए लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अभी हमने रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में ये पढ़ा था. तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन का हो गया. तो अब अगर हम लेते हैं कि दिस इज द, अगर हम ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, हियर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm प्रेशर. तो बॉइलिंग पॉइंट जब ये यहाँ पर रीच करेगा, जब ये यहाँ पर रीच करेगा तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो टेम्परेचर हम लेंगे, दिस टेम्परेचर इज TB, मतलब सॉल्यूशन का. ये जो टेम्परेचर यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर से जब इसको आप इस ग्राफ को जब आप ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो ये जो आएगा दिस इज फॉर व्हाट? TB नॉट, प्योर सॉल्वेंट का. यू कैन इजीली सी कि दैट TB इज ग्रेटर देन TB नॉट.
और यही हम बोल रहे हैं कि दैट इज देयर इज एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. So you have been proved here according to graph also, that is delta TB is equal to TB minus TB naught. So that is the elevation in boiling point whenever we are adding the non-volatile solute to it. Now we will use this delta TB or this colligative property to calculate the molar mass of the solute, because all the colligative properties are, इनका जो significance है, they are used to calculate the molar mass of the non-volatile solute which we have been added to the solvent. So we will start with the relation, that is delta TB is directly proportional to m, where m is the molality. m यहाँ पर molality है. Then delta TB will become equal to Kb into m. Now where Kb is what? Kb is the elevation constant. Kb को हम कहते हैं elevation constant और ebullioscopic constant. Ebullioscopic कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. अब देखिए ये क्वेश्चन भी आता है. एक क्वेश्चन तो यही बना आपका कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या टर्म आपको पता होनी चाहिए. दूसरा केबी क्या है, एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट है. और केबी की इसके अंदर आपसे यूनिट भी पूछी जा सकती है कि केबी की यूनिट क्या होगी. तो केबी की जो आपकी यूनिट जाती है दैट इज केल्विन पर, इसमें ये आपकी यूनिट होती है इसकी केबी की. तो एंड केबी की वैल्यू जो होती है इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट. ये भी क्वेश्चन आता है कि केबी की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है. तो केबी की वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती. तो ये 3-4 क्वेश्चन इसके अंदर से आपके बन जाते हैं. नाउ वी विल सी कि हाउ डज डेल्टा टीबी एंड एमबी आर रिलेटेड टू ईच अदर. इट इज वेरी सिंपल. एज यू नो, जो हमने रिलेशन अभी लिया है, that is delta TB is equal to Kb into m. So here m is the molality. So what is the molality? जब आप molality लिखते हैं तो molality क्या होती है? It is the number of moles of solute per kg of the solvent. If it is in grams, तो आप multiply by 1000 कर देते हैं. ये हम lecture 1 में कर चुके हैं solution chapter में. तो अब जब यहाँ पर इसको आप substitute करेंगे, अब आप इसमें NB को भी अगर आप करते हैं तो it will become WB upon MB into WA in grams मल्टीप्लाई बाय 1000. अब यही वैल्यूज आप ऊपर लगा दीजिएंगे तो आपका रिलेशन क्या आ जाएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000. ये आपका रिलेशनशिप आ गया डेल्टा टीबी और एमबी के बीच में. नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि हाउ द डेल्टा टीबी इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट. डेल्टा टीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमबी, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो इफ यू वांट टू बी कैलकुलेट द एमबी देन यू कैन इंटरचेंज द एमबी. आप यहाँ ले आइए, डेल्टा टीबी यहाँ ले आइए, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एमबी हियर. आप एमबी की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं. सो इन दैट मैनर इन दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वी हैव कंप्लीटेड द डेल्टा टीबी वैल्यू and numericals based on relative lowering of vapor pressure. In the next lecture, we will cover the depression and freezing point, boiling, elevation and boiling point numericals, depression and freezing point, and the osmotic pressure. So till then, you have to complete the lecture and collect your doubts, and we will discuss again.